प्रिय श्रोता, एक बार और आप सभी को मैं स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में मेरे सफर की यादें। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे साथ अंकल श्री उत्कर नायकर जी बैठे हुए हैं और आज हम उनसे बहुत कुछ सुनने वाले हैं प्रिय श्रोता। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं सर्वप्रथम देव फैमिली चैरिटेबल फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा इस कार्यक्रम का स्पॉन्सर किया गया है और प्रसारण भी उनकी तरफ से हो रहा है। और जतीश भाई को, रेडियो ब्रिजवानी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि ऐसा कार्यक्रम को उन्होंने हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और इसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो प्रिय श्रोता, आगे बढ़ते हुए हम सर्वप्रथम पहले जो हमारे अंकल जी हैं उनका संक्षिप्त में बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, क्योंकि जो कुछ सुनना है तो आप उनसे ही सुने तो बेहतर होगा। अंकल जी का वैसे पैदाइश तो लोटोका में हुआ और फिजी के हैं और उनका जो करियर बहुत विशाल रहा है। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में सेव किया है और साथ साथ में हाउसिंग अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव भी रह चुके हैं। तो अभी बहुत कुछ उनसे सुनेंगे और फिलहाल अभी ब्रिस्बेन में निवास करते हैं अपने बेटे के साथ। और हम सर्वप्रथम अंकल जी आपका विशेष रूप से इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं अंकल जी। और जैसे आप सब जानते हैं कि मेरे सफर की यादें एक हम जो है हमारा लाइफ का एक जर्नी है। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि अंकल जी ने अपना जो जीवन है उसको एक डॉक्यूमेंटरी रूप में ऑलरेडी कर दिया है और उनका एक पुस्तक उन्होंने जो लिखा हुआ है, एकोज फ्रॉम फीजी ग्लोबल फुटप्रिंट्स ऑफ अ गिरमिट ग्रैंडसन, तो उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है, तो उसके विषय में भी हम बात करेंगे। और इस पुस्तक का मैं आपको सबको बता दूं श्रोता, इस पुस्तक का लॉन्च जनवरी 23 को होगा और मेरे ख्याल से शायद ईमेल्स भी काफी लोगों के पास गया होगा। तो आगे बढ़ते हुए अंकल जी, मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने जो पुस्तक के विषय में थोड़ा सा हमको बतलाएं, श्रोता को प्लीज। Thank you, Jiten. Audience, I indulge your patience to be listening to me in English, but I will branch off into Hindi now and again. Now, in drafting the book, I have received assistance from a number of people, and I'd like to acknowledge them. The late Professor Bridlal reviewed an earlier draft and gave me some very valuable contributions and suggestions about how to restructure it. In fact, his advice was to restructure it along the lines of one of the books he had written recently. He said that is the structure best to follow, which I did. The other person who has assisted me is Jitendra Kumar, previously the editor of the Fiji Times in Fiji. And in fact, he will be doing the launching of the book on Sunday. The other person, a very crucial person, is Praveen Chandra of Yaadein in Brisbane. He did the formatting of several versions as they got changed, and he did some editing, and then he prepared the final version for the printer and liaised with the printer to get it to the stage that it's in now. I have two major tasks, or two major reasons for attempting this task. And I would just briefly like to explain that. I see it as a tribute to the Girmitians. As the subtitle says, it is the global footprints of a Girmit Grandson. I am a grandson of people who came as Girmitias, and I devote 2 chapters about the Girmit in the book. The first part, naturally, about my Girmit heritage.
the origins of my grandfather and grandmother, and their difficulties in settling down in different parts of Fiji. In fact, my grandfather, when he came from India, he did his Girmit in Drumasi in Tavua, and then he went to Levuka, that was the metropolis of Fiji. And he stayed there more than 10 years. He got married there. Then when the in-letter system was abolished and the CSR company had no more free labor and had to give the farms, allocate the farms to the Indians. And that is when he came back to Viti Levu, went to Singatoka to look for land. Then he came to Vitongo in Lotoka, bought a farm. And then that was not very good. And then allocations in Luvu was happening, and he got a farm there. And that went very well. He prospered in Luvu, and he became the Sardar of Luvu because he was very well educated. But then the reserve came. The farm was so good that it was looked upon as a potential reserve land, and it was reserved, went into native reserve. And my grandfather was then given a piece of land about 3 or 4 kilometers further up in the hills, all covered in red earth and bracken kind of growth. And so we had to work on that one for converting it into a farm. Initially Wright Farm and later on Cane Farm. So in a way, so I grew up in that new settlement area. So while I call myself a grandson of a Girmitia, I have also been very much affected by the reserve and the effects it can cause on a family. We were fortunate, of course, at that time that some resettlement site was provided. The Girmit is also mentioned towards the end. I have a brief paragraph towards the end on finding my roots. I finally managed, after many years, I finally found, with some assistance from able people, to connect with my family in Tamil Nadu. I also talk about the Girmit centenary in 1979, where there was a major celebration going on. But in amongst all the celebration, I did think of 2 particular things. Why the reserve, native reserve happened, and I mentioned that in the book about the misinterpretation of the deed of cession land clause, where whole of Fiji was ceded to Britain, but in the end, only 7% of the land came out as crown land. So that thought of the misinterpretation of that clause and the exploitation by the CSR company of all the farmers were 2 matters that really affected me while I was listening to all these fabulous speeches about the contributions of the Girmitias during the celebration. So I mentioned that also in the book. And there is a very good section on the Lord Denning inquiry, where he found different ways in which the CSR company had hoodwinked the Girmitias for about 5 or 6 centuries, 4 or 5 decades. Thank you, Jitendra. That is my introductory reasons as to why I've written this book. There is a minor reason, and one is that I have been very lucky. I've been very lucky in being able to launch into the life that I finally did. It was not planned at all. It just went from one event to another. And sometimes it is said you've got to be in the right place at the right time.
maybe I was, but it all worked out to me. It was not all excellent. There were a few mishaps, bad lucks, and those sort of things, but that is all part of life. Thank you. थैंक यू अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। और मैं श्रोता, जो लोग रेडियो पर सुन रहे हैं, आप शायद इस पुस्तक को तो अभी देख नहीं पाएंगे, लेकिन जो लोग वीडियो के द्वारा देख रहे हैं और फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं, मैं पुस्तक का जो पुस्तक दिखलाना चाहता हूं कि अंकल जी का लिखा हुआ पुस्तक यहाँ पर है। और इसका लॉन्च आने वाले 23 ऑफ संडे को है। और पुस्तक के विषय में अंकल फिर जब हम समाप्त करने वाले रहेंगे कार्यक्रम, उसके विषय में अंकल से बात करेंगे इसके विषय में। तो वापस चलते हैं मेरे सफर की यादें के इस कार्यक्रम में। और श्रोता, जैसे आप जानते हैं, मेरे सफर की यादें का मुख्य लक्ष्य यही है कि हमारे लोग, जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं और जो लोग ने बहुत कुछ अपने कम्युनिटी के लिए किया है और अपने जीवन में बहुत ऐसे कुछ उपलब्धियां पाई हैं, उसको हम आपके समक्ष हाईलाइट करना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ अंकल जी हैं, जैसे मैंने कहा, अंकल नायकर जी। और हम अंकल जी आपसे पहला प्रश्न तो यही पूछेंगे कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और उसके विषय में आप बताइए। Yeah, I was born in Luvu, Lotoka. Luvu is a settlement. It's the first settlement out of Lotoka on the way to Ba. The adjoining settlements are Vitongo and Drasa. These three are sort of closely linked. I was actually born in Lotoka Hospital. And maybe at that time, I don't know what the circumstances were, but that's where I was born. Now, as I mentioned earlier, some years after I was born, the cane farm in Luvu went into a reserve. And this was a sort of calamity. And even though my grandfather was the Sardar of Luvu, he was among the few calamities on the reserve. And therefore I grew up in that resettlement area called Vatamai. It's about 4 kilometers up in the hills back of Luvu. And this was a very interesting time. I devote one chapter to growing up in that area, because we had to virtually create new farms for planting rice out of the bush. Clear the jungle, cut away all that amrud and babri and all that kind of jungle and bush, and remove all the stones. There were very many large stones because it was a mountainous country. It obviously had a volcanic history. There's a lot of big stones. And so I learned from my grandfather a lot of life values, I would say, of working hard, sticking to your task, taking it to completion, looking after yourself in the process, and do a good job. जी, अच्छा अंकल जी, एक क्वेश्चन है आपसे। I've got a question for you. So your grandfather came from India, or did his parents come from India? Who came from India? My grandfather. So your grandfather came from India. Yeah. Okay. And my grandmother. Yeah. Oh, so they came together? No. They came separately. They came separately. Yeah. Okay. So your grandfather settled in Fiji and obviously married your grandmother, and then they had children. So initially they all settled in Luvu, as you've said, but then as time passed on, they were then resettled into another place. So, yes. And आपके जो कितने आपके पिताजी और कितने भाई बहन थे अंकल जी? Yes, well, my grandfather, as I mentioned earlier, he, after finishing with Girmit, he went to Levuka. Levuka? Yes, yeah. Ji. He lived in Levuka for about 10 years or more, and then came to Viti Levu. And then looking for a cane farm, which was not easy.
Yeah, he finally bought a farm, but fortunately, sometime after that, the CSR company was allocating one of his estates, the Luvu estate, and that is where he got that land. Yeah. My father himself was born in Levuka. Levuka, Yeah, so I've got some Levuka blood in me. Okay, very nice. Yeah. Yes, and then अब पिताजी के भाई बहन कुछ थे कि एक ही no, he was the only one. अच्छा जी, अच्छा. So he sort of grew up in Levuka and in Luvu. जी. And so when he became a teenager, naturally, my grandparents were looking for a bride. जी. But because they were new to the place, they didn't know many people. जी. Certainly, people who came from the same caste or same language group and so forth. But next door in the next door farm was another South Indian family. And there were two girls. One was married, one was still single. So my father married this young lady, who they then together produced a number of brothers and sisters. In fact, altogether we were 6 brothers, all born one after the other. And then 6 sisters. बहुत बड़ा परिवार. All born one after the other. अच्छा. And then 2 more brothers. अच्छा. This was their interpretation. It's a large family. Family planning. It's a very large family. तो सब मिला के 14 भाई बहन. 14. अच्छा, ये तो बहुत ही भारी परिवार है. जी हाँ. जी वेरी जी. तब तो आपके पिताजी, जाहिर सी बात है कि आपके पिताजी जब जमीन रिजर्व हो गया, तो अच्छा, जब जमीन उनका शुरू में CSR जो जमीन मिला था, तो कुछ दिन पिताजी आपके वहां पर काम किए थे कि किए थे? जी. वो बहुत काम किया. वो अपन he became a farmer on that land. जी. As a teenager. जी. तो वहां से फिर जब आगे चल के रिजर्व हुआ तो फिर मूव होना पड़ा. जी. और जैसे मैं जानता हूँ अंकल जी कि फिजी में क्या है कि मैं भी फार्मर हूँ, फार्मर के बेटा हूँ. मैंने भी किसानी किया हुआ है. और किसानी में क्या होता है कि जो पहाड़ी इलाका का जमीन इत्यादि होता है, उसमें उपज तो बहुत कम होता है, लेकिन मेहनत बहुत लगता है. बहुत मेहनत लगता है. तो मैं समझ रहा हूँ कि आपके पिताजी और आपके दादाजी जो आजाद थे, उन्होंने कितना मेहनत किया था कि उस जमीन को फिर एक उपजाऊ जमीन बनाना ना. तो जी, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं. वो सब हम काफी डिटेल में लिखा है जी. कोई चैप्टर 1 में. जी. इसमें एक तो जो मिलमड बहुत काफी लाइक है, वहाँ सब छोड़ना पड़ा तो जमीन को ठीक. और दूसरा दो मॉरिशस बीन, एक तरह का बीन है मॉरिशस बीन. वो इतना ऊंचा होता है. अच्छा, मैं नहीं जानता उसके विषय में. मैं नहीं जानता. जी. उसमें एक केमिकल प्रोसेस है. जी. वो जमीन को मजबूत करता है. मॉरिशस बीन बहुत भारी पतीला है, उसको फिर वे में प्लॉइंग कर देना पड़ता है. जी. और एक और बात इसमें है. जी. जब रिजर्व हो गया तो हम लोग को इनकम क्लास, इनकम स्ट्रीम तो इनकम क्लास तो जी. पिताजी ने मनी लेंडर से काफी दफे बोरो करा. जी. एक प्रोमिसरी नोट के फोटो भी पीएम बोलते हैं इसको. मुझे याद है. और जो वीकली ग्रोसरीज है वो सब उधार में दुकान से लेना पड़ता था. जी. वो काफी बहुत कठिन समय था. जी. तो अंकल जी, फिर वहां से आप लोग जब लोटोका में दूसरी तरफ जमीन जैसे आप अभी कह रहे थे कि आपके पिताजी और आपके आजाद जी मिलकर फिर वहां पर जमीन का तैयारी किया, और फिर वहां पे जरूर आपने अपना फिर मकान इत्यादि जो यहाँ था उसको उखाड़ कर कि कैसे फिर वहां पर. जी. वो मकान वहीं पर रह गया. जी. और जब रिजर्व हो गया, जब रिजर्व हुआ तो कुछ साल लगा ने. जी. वो मतंगाली के आए यहाँ सेटल होने के लिए. जी. रिजर्व तो हो गया, बट वो लोग भी तैयार नहीं रहे. जी. जी नहीं, वो घर वहीं पर छूट गया.
तो फिर यहाँ पर नया घर बना। वुडन हाउस, वुडन टिम्बर एंड टिन के था, जी बगल में बुरे हाउस था। जी। मैं छोटा में वही बुरे हाउस में पला, अच्छा बट बुरे हाउस तो उसके लाइफ बहुत में रहे ना, जी। बट वो घर वहाँ छोड़ देगा और एक और टिम्बर एंड टिन के घर फिर वहाँ नया बनाया। हाँ। जी अच्छा, तो ऐसे हुआ वहाँ पर। और फिर वहाँ से आगे का सफर बताइए अंकल जी। फिर आप वहाँ से परिवार के साथ आपके आजा जी, आजी जी और माता पिता सब नए घर पर चले गए। फिर वहाँ से आगे का सफर शेयर कीजिए हाँ हाँ। अंकल जी। अच्छा, वहाँ पर कुछ कुछ इंसिडेंट्स है, मैं बतलाना चाहता हूँ। वहाँ पे कुछ दिन बाद अमेरिकन आर्मी आया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू की बात है। वर्ल्ड 2 की बात है। हाँ, अच्छा वर्ल्ड वॉर टू की बात है। वर्ल्ड वॉर टू में डेंजर ये था कि जापान जी, हमला कर रहा जापान था। फिजी में आने वाला है, और अमेरिकन आर्मी वहाँ पर, हाँ, नेंडी में ज़्यादा रहा, लेकिन लोटोका में भी स्टेशन रहा है। जी और आर्मी लोटोका में बेस रहा ज़्यादा, लेकिन वो लोग एक रबिश डंप खोला, और ऐसा हुआ, हम एक्सप्लेन करता है बुक में जी कि कैसे वो लोग, मेरा पिताजी की जो जमीन रहा वहाँ पर देखा कि ये अच्छा जगह है, अच्छा रबिश डंप कर दिया। तो वो लोग रबिश डंप बनाया हुआ, तो वो डंप में खाली किचन वेस्ट आता रहा, जी लेकिन और भी बहुत चीज, कैंपिंग कैंपिंग वाला सामान, जैसे टेंट्स, बूट्स और अमेरिकन सोल्जर्स गियर, काफी लोग लाके वहाँ तोप देते रहे और ये तो जला देते रहे। जी ये सब उनको कनेक्ट करा, बिकॉज जो यूनिट रहा वो यूनिट को फिर वो फेयर में जाना पड़ा सोलोमन। जी। तो सोलोमन जाने से पहले वो लोग कैंप पूरा डिसमेंटल डिसमेंटल कर दिए। जी जी अच्छा, वो है। और एक और चैप्टर, एक और सेक्शन है उसमें, मैं बताता हूँ कि टू वुमेन मेक अ न्यू होम। जी हमारा माँ और नानी दोनों पूरा किचन और घर के काम जो है काम इत्यादि। जी सब सेटलमेंट करा, सब पूरा गाय गाय और मिल्क प्रोडक्शन और जी वेजिटेबल्स, फ्रूट ट्री, सब का सब सही बात। सब शुरू से हाँ करना पड़ा ना। हाँ, और करते हैं। जी बिल्कुल सही। और तो वहाँ पे फिर अंकल जी आपका जो बचपन के विषय में भी हम बात ही कर रहे हैं, तो इसी तरह से वहाँ पर आपका बचपन जो है नए घर पर शायद बीता होगा ना, बिकॉज आपका जब जब आप जिस समय पैदा हुए थे उस समय तो शायद ये जमीन रिजर्व हो गया हुआ होगा ना। कुछ साल बाद, वो कुछ साल बाद हुआ। अच्छा, तो वहाँ पर आप गए और फिर और आगे बढ़ते हैं अंकल जी। आप हम आपके पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं कि आपके पास कुछ और जो पुरानी यादें आपके पास हैं जब आप वहाँ पे शुरू में नए घर पर गए थे, आप जैसे कहा। हाँ, वहाँ पे जी थोड़ा कुछ डिस्क्रिप्शन है। जी जी लड़कन सब बड़े बड़े वाले सब बढ़ते हैं, हम लोग काफी गाय बैल चराते हैं, जी और वहीं में लड़का लोग और भी पास के लड़का लोग, आसपास के लड़का लोग आते हैं, जी। तो उसमें गुल्ली डंडा, सूर हाँ, और ये सब ये सब हुआ करता बराबर था। चलता जी है, जी। और चलता वहाँ है। पर बसकीट कैसे था अंकल? ढेर लोग उस समय बस नहीं में नहीं, आके दूर 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 दूर। दूर गांव में दूर। हमेशा होता है। एक पहाड़ पे ही है, दूसरा हाँ पहाड़ पे वो है, जी जी। दूसरा पहाड़ पे एक और बड़े बड़े फैमिली। जमीन है ना। हाँ हाँ। जमीन सब जंगल है, थोड़ा कुछ लोग धान बोते हैं। अच्छा ऐसा। अभी सब वो है ब्रैकन, जो उसकी बोला जाए ब्रैकन। हाँ हाँ हाँ, बंजर जमीन जो हाँ। होता है ना। हाँ ठीक है, तो अंकल जी आगे बढ़ते हैं आपके। अच्छा, एक और जी बात इसमें, जी फैमिली में हम सबसे बड़ा लड़का था, ओके जी। तो हमारा जिम्मेवारी रहा और सबके एक्सपेक्टेशन रहा कि हम फार्मर बनेंगे। अच्छा एंड आई वाज ट्रेन्ड टू बी अ फार्मर। मेरा आजी बहुत हमके साथ में धान बोने के लिए, सब कुदाली चलाने के लिए सब ट्रेनिंग होता था सब आपका। ट्रेनिंग होता था। जी और 12-13 साल में हम पुलाव चलाता रहा। हाँ, बैल से पूरा खेत जोतना है जो। हाँ जी, हेंगा मारना है, कुकुड़िया, खुरखुड़िया मारना हाँ, होता है, सब सब जैसे गन्ना सब। में जो हाँ ना स्प्रे करना हाँ होता है। हाँ। जी जी। अच्छा, तो आपका तो अच्छा, पूरा ट्रेनिंग हो गया था। हाँ, जी पूरा ट्रेनिंग हो गया। जी
तो अच्छा, वो चैप्टर में हम स्कूल के बारे में भी थोड़ा कुछ बताता है जी हमारा जो एक्सपीरियंस है ITS के स्कूल में ना। जी। तो आपका जो पढ़ाई हुई लोटोका में तो हुआ होगा, हाँ। तो क्या एक स्कूल वहां पर है लुबू, जो लुबू में एक है, लुबू संगम है शायद। स्कूल। जी जी जी। हाँ। तो आपका पढ़ाई वहीं हुआ? हमारा क्लास 1 पढ़ाई से? वहीं हुआ, जी। लुबू संगम स्कूल। ये तकरीबन किस साल की बात होगी, याद है? मैं शुरू किया 1942। ओह माय गॉड, जी काफी समय की बात है। 42 to 49। जी। और ये स्कूल बनाया गया जब मेरा नाना जी सरदार थे, जी उन्होंने जमीन वहाँ पे आइडेंटिफाई करा और CSR कंपनी के कोलंबो के साथ जी। राजी हुआ कि ये जमीन, वो पहाड़ था, अच्छा। पहाड़ में हाँ वो सब अमरूद अमरूद पेड़ के हाँ, जंगल पहले तो ऐसे हाँ हाँ। जी, तो अमरूद का तो बहुत जंगल हुआ करता था। कंपनी भी राजी हो गया कि हाँ ये पहाड़ बना लो स्कूल। स्कूल बना लो, जी और मंदिर भी वहाँ जो बना के वो भी बना, जी। सब ऐसे हुआ होगा नहीं। हाँ तो वहाँ पे स्कूल जब बन गया तो फिर आप सब बच्चे जाते थे पढ़ने? हाँ हाँ। स्कूल तो बना 1932 में, 1932 में, तो ये काफी काफी पुराना स्कूल है। और अंकल जी, जो वहाँ पे टीचर्स थे वो सब हमारे जैसे हिंदुस्तानी टीचर्स थे कि वहाँ पर उस समय भी ये जो जो CSR के जो गोरे के क्या बोलते हैं, जो इंग्लिश जो टीचर्स हैं, वो क्या हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन थे कि? नहीं, सब हिंदुस्तानी है, ओ सब सब हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी है। जी कुछ कुछ बहुत एफिशिएंट है, वो लोग सब नसंगवा में पढ़ा, जी। वो लोग नसंगवा में 4 साल पढ़ के तब नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज, वो टाइम दवेलू ट्रेनिंग कॉलेज, जी वहाँ पे ट्रेनिंग करके तब मास्टर बन के आए नहीं। जी। तो सीनियर मास्टर्स क्लास 6, 7, 8 सब एक्स नसंगवा। सीनियर्स। जी हाँ, जी। हाँ। तो वहाँ पे आपके पढ़ाई हुआ क्लास 1 से क्लास 6 तक आप कहे? क्लास 8 तो क्लास 8 तक हुआ। हाँ। अच्छा, तो वहाँ पे आपके जो जो पढ़ने वाले साथ में से तकरीबन कितना बच्चे हुआ करते थे एक कक्षा में, एक क्लास और रफली 25। अच्छा, काफी नंबर था, 25-30 काफी थे। हाँ जी जी जी। तो वहाँ पर तो काफी लोग तो पढ़े हुए होंगे। हाँ और ठीक है अंकल जी, आज आपका पढ़ाई जब वहाँ से क्लास 8 तक फिनिश हुआ जब, हाँ। तो उस तब समय क्या एग्जाम हुआ करता था? क्लास 8 का कोई एग्जाम हुआ करता था शायद ना? एंट्रेंस नहीं हम लोग का बोलते थे? मेरे समय पे थोड़ा ट्रांजिशन था। जी ट्रांजिशन में से है कि पहले एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रहा, वो बंद कर दिया गया, जी। लेकिन दूसरा जो एग्जाम रहा कोई क्वालिफाइंग एग्जाम चलते रहा। जी क्वालिफाइंग एग्जाम उसके बाद नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज के रास्ता खुलता रहा नहीं। जी। तो क्लास 8 के बाद क्लास 8 के बाद हम गए नतंबुआ हाई स्कूल। नतंबुआ सेकेंडरी स्कूल। और सेकेंडरी स्कूल था उस वो समय। टाइम पे वहाँ जहाँ नतंबुआ गाँव है अभी, रोहतक से कोई 5-6 किलोमीटर। हाँ, नतंबुआ वो जो जहाँ पर प्रिजन इत्यादि। हाँ 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 हाँ, जहाँ टीचर्स कॉलेज है। हाँ हाँ, एकदम वही कैंपस है। जी, टीचर्स कॉलेज वाला। यहाँ टीचर्स कॉलेज है। तो वहाँ नतंबुआ सेकेंडरी वहाँ हुआ जी करता हाँ था? हाँ। वो टाउन में नहीं था? नहीं नहीं नहीं, अच्छा टाउन में आया 1963 में। अच्छा, ओके, दैट्स अ हिस्ट्री। तो बुक में पूरा हमारा अच्छा रिकॉर्ड है। जी नतंबुआ में हम 5 साल रहा, और यूजुअली 4 years रहने, लेकिन ऐसा हुआ। अच्छा, नतंबुआ जा रहा टाइम रिजर्व पूरा चालू हो गया। ओ जमीन आपका? हाँ हाँ, हाँ, एक चला गया, समस्या। गन्ना की इनकम सब खलास, जी सब बहुत मुश्किल में हमें नतंबुआ में पढ़ाया गया। और वो भी सेकेंड ईयर में जी प्रिंसिपल ने चूज किया 3 लड़का क्वालिफाइंग एग्जाम करने के लिए। जी और उस टाइम के प्रोसेस ऐसे रहा कि जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग एग्जाम में टॉप मार्क्स है अंडर द एज ऑफ 15, जी। उसको 3 साल के लिए नतंबुआ में स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप के मतलब है नो फीस, कुछ नहीं नो लिविंग कॉस्ट, जी नो बुक्स, जी ये मैं चाहिए फीस, जी लिविंग कॉस्ट, बुक्स। बुक्स तो लिविंग, अच्छा ऐसा हुआ कि 1951 क्वालिफाइंग एग्जाम में मैंने फिजी में टॉप किया जी अंडर द एज ऑफ 15। so I was awarded this scholarship. वेरी लकी जी So 2 मेहनत साल किया बाद आपने हम नतंबुआ हॉस्टल में गए, जी तो 3 साल हॉस्टल में। अच्छा वो 2 साल तक तो नेक्स्ट ईयर तो वो टाइम के सिलेबस रहा सीनियर कैम्ब्रिज, जी जूनियर सीनियर कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से जी एग्जाम सेट होता रहा, वही एग्जाम पूरा ब्रिटिश एम्पायर का बिल्कुल राइट थ्रू पहले से हुआ कैरिबियन करता था जी अफ्रीका में कैम्ब्रिज का हाँ कैम्ब्रिज के। जी हाँ, ये जो वीएस नेपोल है जो वेरी फेमस होता है नोबेल प्राइज वाला, वो जी भी अपन टाइम पे हुआ ट्रिनिडाद में वही एग्जाम कैम्ब्रिज किया था कैम्ब्रिज जी किया जी था। जी अच्छा हम लोग को समय में वो चेंज होता रहा, जी तो न्यूजीलैंड स्कूल सर्टिफिकेट भी हाँ वो मैंने इंट्रोड्यूस किया करा। है वो बाद में आया अच्छा 80s में शायद नहीं, 70s लेकिन 80s हम लोग जेम में पढ़ गया, जी हमारा जो क्लास था वो दोनों एग्जाम, ओह तो पढ़ाई बहुत मिक्सअप था, कोई कोई सब्जेक्ट कैम्ब्रिज वाला है, कोई सब्जेक्ट न्यूजीलैंड स्कूल सर्टिफिकेट अच्छा बहुत 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 डिफिकल्ट पीरियड जी रहा। स्कूल में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ विद द प्रिंसिपल, जी देयर वाज अ स्टूडेंट वॉकआउट, अच्छा बहुत बहुत खराब था, लेकिन आई वाज वेरी लकी, आई गॉट अ फर्स्ट क्लास कैम्ब्रिज एग्जाम पास एंड आल्सो आई पास द न्यूजीलैंड स्कूल सर्टिफिकेट विद वेरी गुड मार्क्स। जी अच्छा सो हो गया। That was very rare, only 2 of us out of about 30 students passed both exams. पास अच्छा तो अच्छा अंकल जी उस समय की जब बात है कि जब आप नतंबुआ में थे तो वहाँ जो नतंबुआ सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स थे वो भी सब हमारे इंडियन भाई बहन थे कि वो भी वहाँ पर गोरे थे जो पढ़ाते थे आपके उस समय Majority were Indians जी and they were all graduates. तो उस समय ग्रेजुएशन कहाँ करके आते थे जी ये ग्रेजुएशन कहाँ करते थे यहाँ पे लोकल स्कूल्स हुआ करते थे उस समय जब जब आप बच्चे थे पढ़ रहे थे तो जो टीचर्स हुआ करते थे उनका ग्रेजुएशन कहाँ हुआ करता था ओवरसीज में हुआ करता था कि फिजी में कोई इंस्टीट्यूशन था नहीं वो लोग सब न्यूजीलैंड से, और न्यूजीलैंड में ट्रेनिंग करते थे न्यूजीलैंड में जाकर बीए एटलीस्ट बीए करते हैं। अच्छा जी तो न्यूजीलैंड में पढ़ के तो फिर वापस फिजी में जाकर Yeah. पढ़ाते थे अच्छा ऐसा था हाँ लेकिन नतंबुआ में वो टाइम प्रिंसिपल सब न्यूजीलैंड से आते थे और यूजुअली साइंस मास्टर, जी science was a subject which the Fiji students were never taught in secondary school and therefore never took that to university. So they did their BA and all that without any science. So European teachers came to teach science and also sometimes English. Yeah, I was taught English for all the 4 years by New Zealanders. Oh, they were mainly New Zealand. I think the first year was an English lady, but others were all New Zealanders. Yeah. So अच्छा तो वहाँ पे आपके सीनियर कैम्ब्रिज आप कह रहे थे कि आपने सीनियर कैम्ब्रिज को पास किया अभी तकरीबन 2-3 स्टूडेंट्स और फिर वहाँ से आगे फिर अच्छा जो लड़का लोग ब्राइट थे एंड हम एक इसमें से ब्राइट था जी उनको फैमिली लोग ओवरसीज भेजते थे पढ़ने के mainly New Zealand, some to Australia, some to America, odd one to England, and about 8 or 10 from my class book में है went overseas, but my father didn't have money to send overseas, so but I had 1 year scholarship left जी नतंबुआ में जी हाँ सीनियर कैम्ब्रिज पास हो गया न्यूजीलैंड स्कूल सर्टिफिकेट पास हो गया और 1 साल बचा जी तो हम लौट के गया स्कूल प्रिंसिपल से बताया तो वो बोले ठीक है you study for the New Zealand University. अच्छा
लेकिन इतना बताया कि देखो सब टीचर्स सब full load है, you have to study on your own. Oh God. हाँ। तो भी तो बड़ा चैलेंजिंग हुआ तो होगा शायद। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हुआ, जी, बहुत ज़्यादा, बिकॉज कोई गाइडेंस नहीं रहा, कोई गाइडेंस नहीं, केवल सिलेबस था हाथ में सिलेबस और मटेरियल था। भी बहुत कम चीज दिखा रहा है यूनिवर्सिटी चलता है। जी जरूर एक टीचर थोड़ा ध्यान दिया, जी JL स्टीवंस, हम लोग को इंग्लिश से ज्योग्राफी मास्टर रहा, वो उसके मतलब हुआ के बाद वो नसीनु ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल रहा जी 1960s में। जी अच्छा, उन्होंने हमको हफ्ता में एक दफे 1 hour a week used to have English lesson with me. जी And one more thing he did, he set up a radio in the hostel जी for me to listen to the radio ABC news जी every day. He wanted me to make sure that pronunciation yeah of the language was correct. yeah you learn Yes, from there. yeah, जी जी yeah. जी जी And also, so after each session, जी we will review what was in the news also, yes and any new words that were used. that you've learned. Yeah. जी So he was the only one that took any interest in me. But unfortunately, around Easter time, जी there was a problem with the principal and there was a change of masters. And so the principal had to go away. And the new principal was Mr. Gananand Mishra. Now, a lot of people may not know him, but he later on became a judge of the Supreme Court and even higher in the 1970s and 80s. जी Now, Gananand Mishra came as an acting principal because at that time, in the end of first term, obviously the department could not import a teacher suddenly a principal suddenly from New Zealand. जी So he was brought in as acting principal. So he brought matters into line. And then around the second term, he began to look at my situation. I was an old boy out. जी A sixth form 6 was created only for me. जी There was no separate. no teachers, no guidance, No teachers, no guidance, no classroom. no classroom. So I parked myself in the lab. Library or In the laboratory. laboratory. एक अच्छा अच्छा laboratory office. जी मतलब was good in science. yes That's why all these European teachers used to come to जी teach science. So there was a fairly reasonably equipped laboratory. Yeah जी जी laboratory. जी जी So he then began to think about me. And at the same time, there were another group of people who were thinking about me. And that was the principal of Sri Vivekananda High School in Nandi जी and his teachers. Because one, they knew I had passed the first grade in senior Cambridge and was doing virtually nothing, didn't go anywhere. And therefore they tried to have some discussion with Gananand Mishra, as a work principal. जी Anyway, then they had a meeting and I was there present with them, my father and one more person. Mr. Mishra said that he had been doing a lot of investigation about manpower needs. And he said there were two kinds of people required very badly in Fiji. One was eye surgeons, जी and the other one was land surveyors. जी And he said that land surveying, you could finish in 5 years' time. To be an eye surgeon, first you have to qualify as a doctor, and then you do another 2 or 3 years of postgraduate work to become an eye surgeon. So naturally, my father said that supporting his son at university for 6 years and then another 2 years was out of the question. Almost Impossible. But then he became very keen about becoming a land surveyor. अच्छा Because I said that in the book जी that he had a lot of trouble with land and security of tenure and all that.
जी. because when the land was reserved, went to the new place, there was no lease, no firm boundaries. जी. And he went from government office to Cesar company in Columbus To get that to sorted. get this sorted out. And in that process, I had to write letters and draw maps जी. from using my high school geometrical set squares and all that. Yeah. जी, जी, And जी. so I became familiar myself. And the interest was there. Yes. And your father was like, this is Oh, yeah. something good. This is something good. So finally he agreed that I should be lent somewhere. Okay, then Mr. Mishra comes into action again. जी. He finds out where's the training. जी, because Fiji में तो शायद होता नहीं No, होगा. there was no training at all. जी, No. जी. Apart from the Senior Training College and the Fiji School of Medicine, there was practically nothing. USP नहीं था उसमें अंकल जी? USP नहीं था? Oh, no. अच्छा. This is, I'm talking 1954. Oh God. USP came in 1968. Okay. अच्छा. तो वहाँ से फिर आपका अब प्रयास हो रहा है कि आपको ट्रेन कहाँ से करें? Well, that was Mr. Mishra's concern. जी. So he found out that to train as a surveyor in New Zealand, you had to be articled to a surveyor. There was no university course. Oh, किसी के साथ में रख के सीखना पड़ेगा. जी. And then you do the exams of the surveyor board. जी. So that was very difficult to organize. हाँ, तो possible नहीं है. Then he checked out from Australia. Mishra was a very well-known person. He had a lot of contact in Fiji among professional people. जी. So he found out that there were 2 universities in Australia that taught surveying. Or Australia had a dual system of articles and also university, but there were 2 universities that taught surveying. One was the University of Melbourne, and the other one was the University of Queensland, what we know UQ. Yes. So we had a quick discussion and decided that because of climatic reasons, we should prefer the UQ option. The Brisbane option. So he wrote to the university. Wrote to the university. Here's this boy who has done all these exams, good marks, and would like to do the surveying exam, surveying course. So there was a very prompt reply from the university saying that fine, they will accept that senior Cambridge pass and all that, but there was one requirement. To enter the surveying course, it required a pass separately in the subject of physics. Oh God. At Natambua, we are doing general science. Physics is very specific. Yeah, very specific. So, and the professor said that if I get a pass in physics in the New Zealand University entrance exam, then they will accept me. Okay. So now the real test came. To the New Zealand physics exam. And this was at the end of second term. Oh my God. Yeah, every second term. And Mr. Mishra said that, look, instead of doing this one subject, you take the whole exam. He was hoping that I might score a scholarship or something. Because Fiji government was giving a scholarship to the person who scored the highest mark in the New Zealand UE. So I had one term left to really, catch up and get there. So I had to take, and also he said, well, look, you were studying chemistry, but drop the chemistry, you take geography. He said, you got A passes in geography in Cambridge, and therefore it will be easier for you to pull up. And Howley, of course, I had not touched geography. Oh Lord. So anyway, very interesting. It was very difficult time because during the year I was studying, and with maths you can go up to a certain place and then you get stuck. No, and then nowhere to go from there. And there were no textbooks. I used the same books as the senior Cambridge ones, and then I knew that there was some last section which was beyond the senior Cambridge syllabus, so I tried to understand all that, but some of them were difficult. In particular, algebra was very, very confusing. In fact, it's always difficult.
I had difficulty not only then, but most of the way through university. But geometry and trigonometry and all that was fun. English was very difficult because in senior Cambridge and all that there was set books. But the New Zealand syllabus said from Shakespeare to the present day. No, you select your own what you want to read. So it was very, very difficult, and I had no guidance. But anyway, तो वहां से फिर आपका I was very surprised that I passed in the New Zealand University entrance. I was the only Indian. Wow. There was Safar Grammar School was teaching that course, and so a number of them passed from there. I remembered all the names because those names were the same were appeared in the list 1 year before in the New Zealand school certificate. So those European boys had done that school certificate the year before. So, but anyway, so I passed, and one very interesting home incident happened at that time. You know, I was just turning 18 years old. I told my mother that, you know, my 18th birthday is coming, you know. She just did not react. What about it? So what? It's a normal thing. You know, it's a normal thing. You don't even worry about it. Government ऐसा होता है. But it just goes to show they're so busy. Yes. You know, doing their own समय नहीं things. था ना जी. That celebrating birthday was out of the question. फिजी में जब हम थे ऐसे ही तो था. फिजी में कौन किसी का बर्थडे बनाता था. लेकिन अब तो चेंज हो गया सिस्टम जी. तो वहां से अंकल जी फिर आपका करियर के विषय में शुरू होगा. लेकिन उससे पूर्व हम अभी यहाँ पे जो पहला एपिसोड है उसको फिनिश करते हैं क्योंकि 45 मिनट्स हो चुका है. अच्छा. फिर आप इस एपिसोड को फिनिश करने से पहले अंकल जी आपके बुक के विषय में एक बार और हम बात कर लेते हैं. इसके विषय में छोटा जो पुस्तक लॉन्च होने वाला है 23 संडे को. ये पुस्तक मेरे सामने यहाँ पर है, आप देख सकते हैं अगर जो लोग वीडियो से देख रहे हैं. और अंकल जिसके विषय में आप कुछ बतलाना चाहेंगे अगर लोग इस बुक को चाहें, पुस्तक को चाहें, तो इसको कैसे पा सकते हैं, कैसे मिल सकता है, और अपना लॉन्च के विषय में कुछ संक्षिप्त में आप बता दीजिए कि वो लॉन्च में क्या होगा, कैसे कैसे आप सब करेंगे. लॉन्च में लॉन्च होगा मिस्टर विजेंद्र कुमार जी, और वो करेंगे जी. और मैं वो तो राजी हो गया, लेकिन हम लोग अभी कुछ डिस्कशन नहीं किया कि जी वो क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलूंगा. जी जी जी. मैं सजेस्ट किया कि मैं कुछ पैसेज इसमें से पढ़ेंगे. Some key stones, key areas of my life. जी. तो मुझे अभी तो मालूम नहीं कि कितना देर तक कैसे रहेगा. जी बिल्कुल. वो मुझे अच्छा जानते हैं जी. हम लोग समूह में क्लासमेट्स हैं. अच्छा. और जब वो फिजी टाइम्स के एडिटर थे, मैं हाउसिंग अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर था, जी. तो उनको पूरा मालूम है कि हम क्या क्या किया है. जी. और इसको मास्टर ऑफ सेरेमनीज रहेंगे मिस्टर प्रवीण चंद्र जी. अभी हम लोग उसके डिटेल अभी आउट नहीं किया. हाँ, तो बाद में होगा, लेकिन संक्षिप्त में वही मैंने कहा. तो इसी तरह से कार्यक्रम रहेगा और ये रविवार को 23 को है. 2 बजे से है शायद. 2 बजे से 4 बजे तक. सनी बैंक साइंस सोशल सॉकर क्लब जो लिस्टा स्ट्रीट जी, वहाँ एक बड़ी क्लब हाउस है जी जी, उसी में होगा. तो ठीक है श्रोता, अंकल जी ने सब चीजें बता दिया. और बुक के विषय में अंकल जी बुक वहाँ पर उपलब्ध रहेगा. बुक रहेगा वहाँ पे बिकेगा. $40 का दाम है इसका. बुक का दाम श्रोता $40 है और वहाँ पर ले सकते हैं. तो फिर बाद में भी हम अंकल का जो नंबर इत्यादि दे देंगे, आप उनसे संपर्क करके पर्सनली भी बुक को. एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि फिजी में अभी कोई कांटेक्ट नहीं है. मेरा एक कांटेक्ट था जी यूएसपी बुक स्टोर में, लेकिन यूनिवर्सिटी में काफी चेंजेस हुआ जी. तो अभी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है वहाँ पर फिजी में बुक सप्लाई करने.
और अगर कोई ऑडियंस में है जो फिजी के कोई मुद्दा की फिजी या कोई फिजी के चाहे लोग विदेश में हो, हाँ। न्यूजीलैंड में हो, चाहे अमेरिका हाँ। कनाडा से पुस्तक चाहे तो हाँ, तो उनको तो हम लोग पोस्ट कर देंगे, पोस्ट कर सकते हैं जी। लेकिन फिजी के पोस्टेज है कोई लगभग $60-70 ऐसा है। हाँ। अच्छा बुक के वेट है अबाउट 1.6 किलो। अच्छा, इसीलिए जी तो जी जी ये काफी कॉस्ट, इसके पोस्टेज इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द बुक। जी। हाँ। अच्छा तो कोई अगर ब्रिस्बेन में जो आएंगे वहाँ बुक लॉन्च में, जी जो कोई फिजी के कोई फ्रेंड है या परिवार है, उनके लिए खरीदने मांगते हैं, जी so my advice would be to buy it in Brisbane जी। and then give it to somebody who's going to Fiji. टेक इट विद Take it with them, बिल्कुल Yeah. बिल्कुल Because if we send it direct from here to Fiji, we'll need to charge the postage. जी। हाँ, बहुत महंगा पड़ेगा। Yeah. जी जी बिल्कुल। तो The चलो postage to New Zealand and USA and all that is less than postage to जी Fiji. जी ऐसा है। हाँ, अच्छा जी। तो बहुत धन्यवाद अंकल जी। और अभी मैं श्रोता हमारे साथ जुड़े रहें, हम अगले हफ्ते फिर अंकल जी से इंटरव्यू और आगे लेकर चलेंगे। और फिलहाल अभी उनके करियर के विषय में बाकी है बहुत, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो हमने केवल अभी उनका जो पैदाइश से लेकर और इनका जो स्कूल का पढ़ाई है फिजी में वो कैसे हुआ उसके विषय में हमने बात किया है। और अगले हफ्ते हम इसको और आगे लेकर जाएंगे। तो प्रिय श्रोता हमारे साथ जुड़े रहें, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। हम